यस, पब्लिक स्पीकिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, स्पीच स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, जीडी के मैंने टिप्स बता दिए हैं, ठीक है। All right, let's have a discussion on a very common topic, that is exam pressure या exam stress, ठीक है। नहीं, that was different. एग्जाम स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. इट इज नॉट ओनली योर as a student, but also your competitive exams come under this. Also your interview section come under this. That is also a type of exam that you have to clear up coming. तो ये सारी चीजें हम आज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. Settle down fast. एक बॉटल. Yes, since we have so much of attendance today, I'm expecting all of you to at least make a point 1 or 2 on the topic. आपके पास time है. I'm giving you 5 minutes to prepare for this. Exam stress आपका topic है. इसके ऊपर जो भी आप बोलना चाहते हैं, repeat हो रहा है point, that is all right. But अपने point of view में, अपने words में बताने की कोशिश करिए, ताकि आपके points ज़्यादा repeat या repetition होता हुआ पता ना चले. ठीक है? नहीं, just make points. We will have a proper discussion on this. आप इधर बैठ जाओ बच्चे. बहुत ज़्यादा कॉर्नर में हो जाएगा. You will not come into frame. आप तीन. Sit this side. Also, I have already told you how to start a discussion. So I want a proper discussion on this. ठीक है? आप लोग को नहीं पता तो आप observe करेंगे. ठीक है? अगर आप लोग ने वो class attend नहीं की थी when I was giving the GD preparation, so you will at least listen to all the people how they are making points. Whoever have attended the class, and after that you will make a point. That is not necessary, but yes, you have to stick to one part, either in the favor of this or in the against of this. Safe exam stress. You can also include your own example with some stories or anecdote from your own side.
2 more minutes. You don't have to be at least purely ready. If you have 1 or 2 points, you can carry on making points or adding to the points that your classmates are saying. You just need to at least initiate with some points. Yeah. Okay, who will start the proceeding? Okay, let me just introduce first. So today we will be having a group discussion on the topic exam stress. It is very well known and it is something relatable to you on every day of your life, because every day you are either giving a test or either giving some questions you have to answer when the teachers are teaching. So what stress and how much stress is connected to this performance of yours when it is examined in the form of exams? Okay. So let's start the discussion. Yes, who will start? Sure. Good morning to all of you. Thank you, ma'am, for giving us a beautiful topic, exam stress. This is related to everyone's students, right? Exam stress is very common for all the examinees, whoever is going through the examination process. So I am with favor of the topic because I also experienced it. Sometimes it creates a big problem to face the examination, but the other hand, it also boosts our confidence. Stress for examination leads to motivation to our study. To overcome from this, we need to do meditation before reaching the examination center, or we have to be motivated. Thank you. Okay, so basically she is saying that stress is somewhat good, and if you take it very carefully, if you maintain your calm very carefully, it is helpful for you to motivate you to study well. Next, you want to go? Good morning, everyone. So today I'm going to give my points regarding exam stress. I don't think that exam stress is a nice thing because it leads to problem. It leads to great problem for us because it affects our mental health. Not only that, we just start to just don't focus on the content of that chapter. Instead of that, we focus on covering those chapters, which is a bad thing because whatever we study in our daily life is all is about like using that knowledge to our like work in reality. Yes, if we start like become stressed, then we will forget that what we have learned and how we can apply that. So I don't think it is good. It leads to a lot of problems. If I think like exam is stress, then if I say about myself, I remember I have experienced in 10th class before my 10th examination, before my pre-boards, I was so like having a stress that I don't think what will happen to next, and I even have a fever also. So I don't think it is good for anyone because exam is all about judging the stress, how much we have learned. And if we just give an exam, we know that what we have reality understood. It's not all about the marks. It's like what you understand while going throughout the year in, or like having a school, having a teachers and friends, what you have learned in your class. It's not about your marks.
just understand that education is not about marks only. It's all about your knowledge and excellence. Because at the end of the day, your marks is not going to judge you. Your marks is not going to give you a job. It's just tell your excellence, how you are performing in day-to-day life and how everyone is judging you. That's matter. Your behavior, your activity, your learning potentiality, that matters, not that marks. So don't be stressed of examination. Just start to just learn the content and whatever the knowledge the content is trying to provide you, just go through that. Okay, so her point was mainly focused on that stress sometimes lead to mental and physical sickness, and it might be not concentrating or letting the students understand deeply in-depth knowledge, but they are more focused on getting marks, proper marks, so that to satisfy their needs of having good grades. Yes, next. Don't look at the paper. How many points do you have? Just make your point if you have even one point. Yes, do you have a point, Bachchu? Whatever point you have, don't hesitate. Just stand up and say your point. So it's obvious for students to have exam stress. We may get exam stress treatment our syllabus is not completed. The students who don't attend the exams, then they may have exam stress. In COVID situation also, we all were attending online classes because of that. It's causing us exam stress. The topics are not properly clear. To avoid this, we need to prepare for the exam before start revising. So basically, her point was, if you are well prepared, you shouldn't take any more stress. If you have any delay or in anything that you haven't done during the course, you might get stressed because of that. All right. Anybody else? Good morning, ma'am, and everyone. According to my point of view, that exam stress creates an insecurity or it creates a mental disturbance. During the time of exam, we are all getting fear from exam. Our mental situation is not stable. At that time, only negative thoughts are coming in our mind that this type of questions are going to come in our exam. At that time, due to fear, we cannot focus on our studies properly. Okay, due to fear of examination, you're not able to focus carefully on the things that you're reading rather than just having good marks in the examination. Yes, next. Good morning, ma'am. I'm Sanjana. Today I say about something, exam stress. Exam stress is main thing that discourages the students. There are a lot of students who are intelligent, but the stress for exam doesn't let them study. How does exam stress affect the students? This causes you to worry, more experience, anxiety, and depression. Loss, sleep, become irritable, exhausted, and felt out of control. This can really impact on our ability to prepare your exam. The exam will not be education, but sometimes examination is the method of measuring our ability. Examination makes students slow and upgrade. It can write our future. A piece of paper decided our future. Okay, so basically her point was that due to exam stress, a lot of people who had actually have an greater IQ are not able to concentrate because they have creative mind and they have to put their mind in a box because of the certain pattern of examination, certain type of questions they have to answer, and that creates a lot of stress in those people, which is not good because it kills their creativity and it does not allow them to grow their mind. Anybody else? Yes, you too. Any points from your side?
नहीं है. Okay. Yes, others here. Do you have a point? No. I do not think that your point are just similar. That's why you're not saying. Even if it is similar, just make your own example. Give your own example. The same concept can be utilized again if you give your own example. ठीक है, अपना कोई additional example या story add on कर दो उसके साथ. ठीक है, just to आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पॉइंट्स बोल दिए. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि अगर आपको नया पॉइंट्स कोई नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ऐड ऑन मोर स्टोरीज, मोर एग्जांपल्स टू स्टेबलाइज देयर कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं विद योर एग्जांपल्स. अभी आ रहा है बच्चे, आज 40 हो गए. यस, आप लोग इधर, आप लोग का पॉइंट्स हो गया बच्चे. Don't think too much. You're thinking too much. You're getting confused in your heads only. आप जितना ज्यादा सोच रहे हो उतना ज्यादा आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख. Yes, हो गया. Those two. This one here. Do you have any point, बच्चों? Give her the topic for discussion. Topic उनसे ले लीजिए. Okay, let me ask question for you. It might take you a little bit help to answer some theories. Like as we have both the points, there are some in the favor, some in the against. So if we compare the points, a lot of people have actually experienced a lot of stress in their life because of the examination. But think of a time when you have nothing to stress about in certain way. Like let's say, for example, if you have an add-on subjects, okay, once it does not have an examination, okay, do you have any stress for that? No. How much you are learning from that? How much you are learning for that? Like you don't have any stress because first thing, it is not included in your mark, it is not included in your percentage. Okay, it is just an extra weightage that you can carry on in your report card, like those sections in your report card when you were in the school, for good behavior, for good communications in the classroom interaction. So basically it is just an extra, just to add on to your you can say a good report card presentation. ठीक है, आपका एक जो रिपोर्ट होगा वो अच्छा बनाने के लिए, दिखाने के लिए add-ons add किए जाते हैं. तो you don't have any stress, actual stress for the marking. So how much are you actually learning from those subjects? Like you have an add-on for the English communication, you might have an add-on for other subjects also. So how much actually you are learning from those subjects which does not have any actual stress on your mind? Our interest. If there is account, then we are interested in that. Okay. If there is, I mean, English also we are interested. It's not like we are right? But the section like grammar section, except the grammar section. Okay, you are not going to go in depth study for those subjects that don't have stress in them. Okay. Let's say even for the accounting subjects, take care. Even for the accounting subject, if you have an add-on for that, take care. You are not actually going in-depth education for that, right? You are just learning what all your teachers are learning. You are not putting your own effort to learn on that, right? You're not just go at home and just researching on the topic that you have been taught.
You're just learning the things that you have been taught in the exam here in the class by your teachers, right? So in-depth learning आप कब करते हैं? When you have exam stress, right? So if it is totally eliminated from a human mind, will you be able to succeed in life? No. Can you elaborate? Can you give an example? Like if you have no stress, okay, let's say your parents aren't forcing you for any examination to qualify, okay, let's say your teachers aren't forcing you to learn anything in the subject, because let me tell you one thing, the actual college learning, जो college का एक procedure होता है पढ़ने का, वो यही होता है कि ना तो आपके parents बहुत ज़्यादा force करते हैं आपको और ना ही teachers, ठीक है? That's why they are called lecturers in the college, ठीक है? There's a difference between a teacher and a lecturer. Lecturer doesn't give anything if you're learning, if you're listening, if you're not listening, if you're making notes or not, they don't care, ठीक है? They are just there to impart their knowledge to you. Now, if you care enough for your career, you will care what all things have been said. If you don't, then even though they don't care. And the teachers that are present in any organization, whether it is a college, whether it is a school, they care for the children, that they have to study, whether they have to repeat the topic twice, thrice, 4 times, 5 times, but they have to care of all the students to understand each and everything. Why is it the difference between those two things? Let's take it in a professional way. आपका अभी तक तो एग्जाम जो था, you are thinking about as a student. Let's think about in a professional way. ठीक है? If in a professional way you don't have a stress, even in the professions you have exams. It's just not your, you don't get marks for that. Okay, you have to go through every day filing reports, giving reports to your senior, getting the work done. This is all a minor exams that you have to give in a profession. So if there is no stress to complete that work, how much you will be able to give, put your effort in that work? Let's say you have to publish a report for certain products, ठीक है? आपको उसका research करना है, उसका एक project बनाना है, and you have to submit your report to the manager. But he or she is not strictly tying you to a deadline. ठीक है? वो deadline नहीं दिए हैं आपको. You just have to prepare how much your time you're taking. It is no stress. So what exactly are you? How much effort are you going to do in that research? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes. Other नहीं समझ में आ. Okay, let me repeat again. My question is कि मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है? आपके मैनेजर ने एक प्रोडक्ट का रिसर्च करने के लिए आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बोला, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की या कोई डेडलाइन नहीं दिया आपको. उसने बस बोल दिया कि ये प्रोडक्ट का रिसर्च करके तुम रखो अपना, ठीक है? एंड neither has he or she specified, उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया है कि उन्हें क्या क्या चाहिए उसमें रिपोर्ट में, ठीक है? तो if it is not specified, then you can have a variety variable, बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे रिसर्च करने के लिए, ठीक है? तो उन सभी चीजों को रिसर्च करने में आप कितना एफर्ट डालेंगे, क्योंकि आपके पास डेडलाइन का स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? ना ही आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक इंक्लूड करने का स्ट्रेस है. तो जब स्ट्रेस नहीं है तो आप उस काम में कितना स्ट्रेस मतलब एफर्ट डालेंगे अपनी तरफ से? नहीं, that is what I'm asking ना. Like you are thinking on the student perspective. Think of it as a professional prospect. There, it is not something that you're interested or not. Okay, you have been given a work, you have to finish the work. That is the only requirement. So the thing is कि जब stress होता है तब आपके पास एक deadline होती है. For example, if I have to take a proper examination, internal examination, so we have a deadline that on that particular day, that particular time duration, you have to submit the question paper for each and every paper that you're taking. तो ये हमारे लिए एक deadline है. So we have a little bit stress कि yes, in between the classes, whatever free time we have to make the question paper and send it to the exam department. So if that stress is ruled out, like if there is no deadline for completing the work, that means there is no stress or no particular
समथिंग जो आपके सर पे कुछ लटक नहीं रहा, वो डंडा आप देखते हैं हमेशा, वो डंडा नहीं है, तब आप कैसे काम करें? काम नहीं कर सकता। ओके, क्या पॉइंट हो गया बच्चे? जोर से बोलो। फ्रीली बोलो। ओके, फ्रीली काम करेंगे। फ्रीली इन द सेंस व्हाट? एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, समझाइए इसका क्या मीनिंग हुआ आपका फ्रीली बोलने का। हाँ हाँ, आराम से करेंगे, ठीक है। तो आपको इन, मान लीजिए कि आपको डेडलाइन दी गई है उस रिपोर्ट के लिए 20 डेज, ठीक है, और वो डेडलाइन नहीं है, तो क्या आप 20 डेज में कंप्लीट कर लोगे उस रिपोर्ट को? यू आर केपेबल इन फिनिशिंग दैट इन विद इन 20 डेज, तो क्या आप 20 डेज में कर लेंगे उसे? करना पड़ेगा। नहीं, जब डेडलाइन नहीं है, यू आर केपेबल ऑफ फिनिशिंग इट, जो काम दिया गया है आप केपेबल हैं कि आप 20 दिन में उस प्रोजेक्ट को रिसर्च करके आराम से रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन डेडलाइन आपको एग्जैक्टली नहीं बोला गया कि उस 20 दिन के बाद आपको सबमिट करना ही है, आपको बस रिसर्च करने बोल दिया गया, तो क्या वो 20 दिन काफी होंगे आपके रिसर्च के लिए? और बोलो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बोलो। 20-30% आप दे ही देंगे। ओके, so basically it is dependent on the individual of how seriously he or she is taking the work. Like even if you don't have a deadline, like let's say कि आपका अगर एग्जामिनेशन का कोई डेडलाइन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है एक कोर्स which is helpful in your career, and that is totally up to you कि आप जो 3 साल का कोर्स है इस ड्यूरेशन में कभी भी कितने भी टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। At the end of the 3 years, then you have to give an examination. So how much more effort do you think you are going to give on that particular subject? Like मान लीजिए आपको बोला गया कि ये एक पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके फ्यूचर में आपके करियर में बहुत काम आए, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए आपको मटेरियल दे दिया गया, ठीक है, और क्लासेस जो हैं रिकॉर्ड करके रख दी गई हैं, आपको भेज दी गई हैं, ठीक है, वो आपको देखनी है और आपका मटेरियल जो दिया गया है उसको पढ़ना है। और 3 साल में जब आप फाइनल सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, उसके साथ इस पेपर का एग्जाम होगा, छोटा सा एमसीक्यू और समथिंग लॉन्ग आंसर टाइप 2-3 क्वेश्चंस। तो उस ड्यूरेशन में 3 साल में आप कितना ध्यान उस सब्जेक्ट पे देंगे? एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है, दैट मीन्स देयर शुड बी अ डेडलाइन इन सर्टेन सब्जेक्ट्स और सर्टेन थिंग्स टू हैव समथिंग इन योर माइंड, ठीक है। मैं ये चीज बता दूं, देयर इज अ रियल लाइफ सिनेरियो, ठीक है, कि आप अगर स्ट्रेस नहीं देते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेस होना जरूरी है, इसीलिए अथॉरिटीज बनाई गई हैं, हर एक के ऊपर कोई और एक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इफ देयर इज अ ओनर और सर्टेन थिंग्स तो वो किसी को जवाब नहीं देते हैं, दे हैव सर्टेन पीपल दे हैव टू लुक अप टू, ठीक है, और दे हैव टू आंसर द क्वेश्चन फॉर दोज पीपल। तो अगर वो चीज नहीं रहे या वो चीज पॉसिबल ना हो सबको बताना, तो आपका जो काम होगा वो बहुत ही डिले होता जाएगा, ठीक है। If there is nobody to ask you to do those things, at least in a certain duration, after a certain duration, 10 days, 20 days, somebody is asking if that is finished or not. तो आपका ध्यान उसी चीज पे रहेगा. Even if it is interesting, you still won't be able to devote a particular time every day. अगर वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है तो भी आप हर दिन या तो आप उसको एक ही बार में फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आपको रिविजन करना पड़ेगा दोबारा से, बिकॉज आप उस ड्यूरेशन में भूल जाएंगे बीच में कहीं ना कहीं, या फिर अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में कभी भूल जाएंगे, बिकॉज मान लीजिए कि आपका जो टॉपिक है वो आप पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन एक मार्क्यू का एग्जाम है उसके लिए पढ़ना है, तो आपने उसको साइड कर दिया,
अब नेक्स्ट डे और एक मार्क्यू हो गया, उसके लिए भी पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट को फिर साइड कर दिया। आफ्टर 2 or 3 days इफ यू हैवंट कंटिन्यूड दैट स्टडिंग, आप भूल जाएंगे कि वो पढ़ना भी, वो आपके शेड्यूल से ही बाहर हो जाए। ठीक है, सो देयर शुड बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, बट कितना स्ट्रेस होना चाहिए ये भी तो मायने रखता है, क्योंकि कितना स्ट्रेस आपको लेना है एक सर्टेन थिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रेस जरूरी है ये तो हमने देख लिया। अब कितना स्ट्रेस आपको लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग मेंटली या फिजिकली इल हो जाते हैं, तो कैसे पता करें कि इस ड्यूरेशन के बीच ही आपको रहना है, कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं आप? Okay, any other points that you can give up to this? How to let's say how to measure your own stress level? आप अपना कैपेबिलिटी, आपका कैपेसिटी कितना है स्ट्रेस हैंडल करने का, वो आप कैसे समझेंगे? Because there is no parameter that you can uphold to measure your stress. तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेस आपको मेंटली या फिजिकली इल कर रहा है या नहीं, या ऑब्वियसली उस ड्यूरेशन तक आने से आप कैसे बच सकते हैं कि आपको मेंटली फिजिकली इलनेस ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहे ताकि आप मोटिवेटेड रहे काम करने के। Pre-planned strategy doesn't always work because there are certain things that will always happen. जैसे अभी मैंने बताया, आप अगर वो एग्जाम का आपको स्ट्रेस है, ठीक है, एग्जाम तो एट द एंड 6 सेमेस्टर पे देना ही है, तो उतना थोड़ा बहुत स्ट्रेस है आपको, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है तो मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन जो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, वो सामने आ जाए कोई काम, तो डेली आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, यू विल पुट इट टू रेस्ट until and unless your urgent and important works are finished. ठीक है, and by the time those things are finished, you don't have a place in your routine for those particular interesting things that you think will be important in later on. ठीक है, तो वो स्ट्रेस लेवल आप कैसे अपने आप को हैंडल करें कि ना ज्यादा स्ट्रेस हो ना कम स्ट्रेस। नहीं पता। Motivated, how you can keep motivated? Okay, any other way that you can find to self motivate yourself? See, stress will always pile up in your life. There is no time in your life when you're not stressed. Even when you're 5-year-old, you think that other people seeing you think that you don't have a care of world, but you do have stress. ठीक है, भले वो छोटी मोटी चीजों के लिए हो, नॉनसेंस चीजों के लिए हो, but you still have stress in your life. So each and every person in his or her life, आपके ड्यूरेशन में हर बार आपको स्ट्रेस तो आएगा ही, बट द थिंग इज कि उस स्ट्रेस को बाहर भी निकलना है। लाइक एग्जाम हो गया, उसके बाद हाउ मच रिलीफ डू यू फील, राइट? तो एग्जाम अगर हो जा रहा है तो वो रिलीफ आपका जो है वो मिल जा रहा है आपको, लेकिन हर चीज में तो बाहरी मोटिवेशन नहीं चलेगा। ठीक है, हर चीज का एग्जाम या हर चीज का स्ट्रेस ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जाम होने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाए। समटाइम्स यू हैव टू टेक दैट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई स्ट्रेस है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इस चीज को आप स्ट्रेस कर रहे हैं कि एग्जाम टाइम्स दिक्कत हो जाएगी, नहीं आंसर कर पाएंगे, तो इस स्ट्रेस को बाहर कैसे निकालेंगे? टेक अ हेल्प फॉर समवन। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, बुक्स रीड करिए, टीचर से पूछिए, फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, if you have a stress of let's say peer pressure, ठीक है, ये this is a very common stress on youth। ठीक है, peer pressure का stress हो रहा है कि अरे बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा ही नहीं अच्छा हो रहा है, मैं तो क्लास भी अटेंड करती हूँ सारी, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं।
ठीक है. These all stress pile ups in your life. Now you are a bottle of container, ठीक है, and if it keeps piling up, it will start overflowing, and that overflow is the burst that comes out of you. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाते हैं लोग. वो क्यों होता है? Because it is already full, and once you put one drop inside it, it will start overflowing. ठीक है. So what you have to do is you have to clear that container with the help of someone else. ठीक है. Take that stress out in certain way. Do your hobbies regularly. आपकी अगर कोई hobbies है, ठीक है, मूवी वॉच करना, ठीक है, या म्यूजिक सुनना, या फिर अगर किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी का प्लेइंग में इंटरेस्ट है, कोई सर्टेन गेम है जो आप प्ले करते हैं, तो वो सभी चीजें अपने रेगुलर रूटीन में उनको 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, हाउएवर टाइम ड्यूरेशन यू कैन गिव, बट गिव द टाइम टू दिस. उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बाहर भी आता जाएगा स्ट्रेस आपका. ठीक है. अब इस बॉटल को जरूरी तो नहीं है कि एक ही बार में सारा पी जाओ पानी. ठीक है. एक एक घूंट करके भी पियोगे तो खत्म हो जाएगा. भले आप पानी दोबारा भर लो फिर से इसमें, राइट. तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू कीप इट आउट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, यू हैव टू रिलीज इट. और हॉबीज से ज्यादा स्ट्रेस रिलीवर अच्छा कहीं नहीं होता है. ठीक है. इट रिलैक्सेस योर माइंड. वो जो ओवर थिंकिंग थॉट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर थॉट्स कम इनटू योर माइंड, बहुत ज्यादा थॉट्स रहना भी ओवर पावर कर देता है. Like let's say it is something like you're just keep on storing in your phone and it has a certain amount of memory in it. ठीक है. After that it will fill up. उसके बाद बाकी सब जो आएगा वो fill up होगा क्या? It will keep demanding you to clear up your memory. ठीक है. It will not work properly. तो वो सारी चीजें आपके दिमाग के भी साथ होती है. You have to keep the stress out of you. It will keep on coming, but you have to drain it on a regular basis. ठीक है. तो हॉबीज निकालिए या एक्सरसाइज कीजिए. ठीक है. एक्सरसाइज इज अ वेरी बेस्ट वे ऑफ रिलीजिंग योर स्ट्रेस. ठीक है. किसी भी फॉर्म में कीजिए. एटलीस्ट शाम को कम से कम 15 मिनट टहल के ही चले जाना कहीं. ठीक है. फ्रेंड से बात करिए. ठीक है. एटलीस्ट 15 मिनट्स to 10 minutes. Talk to that person who you feel comfortable with talking about anything. ठीक है. पेरेंट्स से बात करिए इफ यू हैव अ पर्सनल स्ट्रेस रिलेटेड एनीथिंग. ठीक है. सिबलिंग्स से बात करिए. ठीक है. बेस्ट फ्रेंड से बात करिए. बट सर समटाइम्स टेक अ हेल्प फ्रॉम सराउंडिंग पीपल ऑल्सो. ठीक है. आपके लोग, आसपास के लोगों से आप हेल्प लीजिए ताकि वो स्ट्रेस जो है वो बाहर निकलता जाए. अंडरस्टूड? ओके. So to conclude this discussion, we think that stress will always be important in our life, but we have to keep it in a certain level so that it doesn't give us any illness, whether mentally or whether physically. ठीक है.